हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डिफाइन टाइप्स ऑफ ट्रेड, कितने तरीके की ट्रेड्स हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं बाकी सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी नोट्स दे चुका हूं। अगर आपको नहीं दिखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो यहाँ पर, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। टाइप्स ऑफ ट्रेड देखिए, ट्रेड में बी डिवाइडेड एज इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या है? द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इनसाइड द कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस इन द करेंसी of the country. First, internal trade may be of two types. क्या है? Number one, wholesale trade. In wholesale trade, goods are purchased in large quantity and are sold to retailers. First of, a wholesaler is a link between the producer and the retailer. The producers can produce in large quantities and sell the goods in large quantity to retailers. दूसरा है retail trade. Retail trade involves selling goods to final customers. The goods are purchased from wholesalers and are sold to the customers in small quantity. A retailer is a link between the wholesaler and a consumer. दूसरा है देखिए external trade. The trade between two or more nations is called foreign trade or international trade. This involves the exchange of goods and services between the citizens of two nations. For example, India's trade with USA, Japan, France, UK, etc. Foreign trade transactions are classified under three categories: import trade, export trade, and export trade. अब यहाँ पे इन तीनों को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे। नंबर वन, इम्पोर्ट ट्रेड। इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स फॉर फॉरेन कंट्री। इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड्स एंड एनकरेज्ड इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर गुड्स। नंबर टू देखिए, एक्सपोर्ट ट्रेड। इट रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स टू ए फॉरेन कंट्री। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एनकरेज एक्सपोर्ट्स बिकॉज इट्स ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज। तीसरा देखिए, एक्सपोर्ट ट्रेड। समटाइम्स गुड्स आर परचेज्ड और इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग और एक्सपोर्टिंग देम टू सम अदर कंट्री। इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। अब बात करते हैं देखिए, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का 2016 में आ चुका है। द बेसिक फैक्टर्स टू केप्ट इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस। सबसे पहले देखिए, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस लाइन। द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर इज द लाइन एंड द टाइप ऑफ बिजनेस ही वांट्स टू स्टार्ट, वेदर ही वांट्स टू सेट अप एन इंडस्ट्री और इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन कमर्शियल एक्टिविटीज। द डिसीजन इज टेकन बाय द एनालिसिस द मार्केट, द कस्टमर डिमांड एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द बिजनेस। नंबर टू देखिए, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट्स। आफ्टर डिसाइडिंग द लाइन ऑफ बिजनेस, द बिजनेसमैन मस्ट डिसाइड whether he wants to set up large scale or small scale business. Before taking this decision, entrepreneur must find out his capacity to arrange capital, demand and scope of business. Number 3 देखिए, form of ownership. The next decision which must be taken by entrepreneur is finalizing the form of business, whether to set up a sole proprietorship, partnership or joint stock company. The decision depends upon various factors such as amount of capital, liability, personal touch, legal formalities etc. इससे पहले अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उसके साथ साथ पीडीएफ का अगर आपको चाहिए तो पेड फॉर्म में मैं आपको सारे पीडीएफ पूरे 12 यूनिट्स में आपको भेज दूंगा, बहुत क्लास 11 और क्लास 12 के। उसके बाद देखिए, नंबर 14, मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस विच इज टू बी प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। वन शुड कंसिडर द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, अदर सोर्सेज ऑफ सप्लाई, पोटेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ डिमांड। दैट इज, इफ ए बिजनेस इज सेट अप विदाउट सच एनालिसिस, देयर मे बी inadequate demand or no demand for the product, that business may have to close down. Number 5 देखिए, financial resources. After deciding the form of business organization, the business must analyze the amount of capital he might require to buy fixed assets and the amount required for working capital. चौथा देखिए, बिजनेस लोकेशन। अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन व्हिच एंटरप्रेन्योर मस्ट टेक केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इज डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ द ऑफिस और प्रोडक्शन यूनिट। बिफोर टेकिंग दिस his decision, he must find out availability of raw materials, power, labor, banking, transportation and communication etc. चौथा देखिए, plant layout. Plant layout is drawn to show the arrangement of physical assets. Layout means the physical arrangement of machines and equipment needed to manufacture a product. उसके बाद देखिए, government policy. Sometimes governments follow the policy for developing a particular industry or product by giving various incentives such as tax concessions, power connections, subsidies, cheap loans etc. On the other hand, this strict adherence to certain laws and regulations at some places may be not be interested of the new uses. उसके बाद देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे कि मैंने कहा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। यहाँ पे आप देख सकते हो, वर्क इज वर्कशिप, एक्टिविटी इज द जॉय ऑफ लाइफ, मैन ऑलवेज कीप्स हिमसेल्फ एंगेज्ड इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी टू सेटिस्फाई हिज मटेरियल एंड सोशल नीड्स। द एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग क्रिकेट मैच, प्लेइंग फुटबॉल, washing clothes, driving car etc., buying and selling of goods etc. are some source of the activities which are continuously carried by the us। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कैसे डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसी के साथ यूनिट 1 खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट 2 शेयर करूंगा। अभी फिलहाल 12th का नोट्स आने वाला है। ठीक है, तो आई होप को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।